नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग. Today we consider the lesson I want, page number 29. Before this lesson, you have studied the poem. Which poem? I am lucky. The poem name was I am lucky. In this poem, the poet wants to be like some creatures, and at the last of the poem, poet asked you, what do you want to be? Okay, and I have explained so many professions and so many occupations for you that you can choose anyone for your career, for your life. Okay, so after that poem, in this lesson, I want, this is the story of a little monkey. A little monkey want to be like some other animals. Okay, actually he wants to copy the other animals. So at the last, he looked like awful, so terrible. Okay, इस स्टोरी में एक मंकी दूसरों की तरह, दूसरे एनिमल्स की तरह बनना चाहता है, इसलिए वो लास्ट में बहुत ही डरावना बन जाता है. ठीक है ना. और बाद में फिर वो चाहता है कि मैं जैसा था वैसा ही बन जाऊं. और इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी ये समझना है कि आप भी किसी दूसरे की कॉपी नहीं कीजिए. आप हार्ड वर्क कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए, और आप जो बनना चाहते हैं वही आप बनिए. मीन्स डू हार्ड वर्क, एंड what do you want to be, that you become that career, profession or occupation. Okay, so before the story, actually I want to introduce some characters comes in this lesson. Okay, so there are some characters. You can see your screen. The first of all, this little monkey, about this वेरी मच सेड इन दिस स्टोरी. बहुत कुछ कहा गया है इसके बारे में, वो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले आप कुछ कैरेक्टर्स को पहचान लीजिए. लिटिल मंकी, LITTLE, लिटिल, MONKEY. So you have to learn the spelling also. Okay, little monkey. Then a word came in the lesson, wise woman, WISE, wise, WOMAN, woman. Okay, so actually wise woman said in this story about fairy, FAIRY, fairy. You can see the picture of fairy. आपने परी की पिक्चर्स देखी होंगी, उन्हें ही फेयरी कहते हैं, और इस लेसन में उसे वाइज वुमेन कहा गया है. You can see the picture of wise woman or fairy. The next one is magic wand, MAGIC, magic, WAND, wand. You can see these are the pictures of magic wand. By this the fairy fulfill your all wishes. जो परियां होती हैं ना, वो इस जादुई छड़ी से सारी इच्छाएं पूरी कर देती हैं. दे फुलफिल ऑल योर विशेस बाय दिस मैजिक वैन. ओके, द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जिराफ. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जिराफ. Giraffe is also a big animal having long neck. You can see the long neck. Okay, you can learn the spelling of giraffe and long neck, GIRAFFE, giraffe, LONG, long, NECK, neck. Neck is the part of body part of this giraffe. We have also a neck. Okay, we have also a neck. This one is neck. Okay, yes. Next character, elephant.
You all are very much familiar with this picture. This is picture of an elephant, and elephant has a trunk. You can see the trunk. Okay, this is the long nose of the elephant is called trunk. The next one is zebra. You can see the picture of zebra, and zebra have some strips, okay, of black color on his body. जेब्रा की बॉडी पर ये स्ट्रिप्स होती हैं, ओके, ये देखिए, लॉन्ग और नैरो लाइंस ऑफ ब्लैक कलर ऑन हिज बॉडी, ओके. And there are some words came in the lesson. Whiz, WHIZZ, whiz. Pop, POP, pop. Bang. Actually, these are magic sound. Okay, when the fairies uses the magic wand and fulfill your wishes, then sound creates a magic sound like pop, bang, whiz. So these words came in this story, so you learn that these are some magic sounds, okay. After that, you have to learn some spellings of the long words given in the lesson. The first one is STRETCHES, stretches. Stretches, आप जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है टू पुल समथिंग टू बिकम इट्स लॉन्गर और वाइड. किसी चीज को लॉन्ग करने के लिए और वाइड करने के लिए हम खींचते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचेस, ओके. नाउ लीव्स, यू नो दैट लीव्स आर पार्ट ऑफ प्लांट्स और ट्री, ओके. LEAVES, लीव्स, बहुत सारी पत्तियां. स्ट्रिप्स, STRIPES, strips, and you can see the strips on the body of the zebra. Strips means some narrow lines, किसी भी कलर की हो सकती हैं. जेब्रा में ब्लैक कलर की हैं, ओके. मॉन्स्टर, MONSTER, मॉन्स्टर मीन्स वेरी big, terrible, okay. And remember means having something in our mind, keep in our mind, that is called remember. And awful, AWFUL, means very bad. Awful means you can say very bad, or it's also means terrible, okay. So these are words you have to learn and write in your copy 3 times.